what is the objectivity of performance appraisal system, why we are studying this will come across through this definition. Can you move first slide? Appraisal system measure employee performance against previously agreed goals, set future objectives, and give the staff guidance on their development and training needs. They help managers identify both achievements and shortfalls in performance and give a framework to guide future improvement. इतना फास्ट गया आपको समझ में नहीं आया होगा. But the thing is, when you are working in any organization, there should be evaluation parameters through which they will judge you. आप पूरे साल जो काम करते हो, for that there should be some parameters जिसपे your efficiency level will be checked, and whenever you are facing any kind of distractions, that should be controlled. Elements of management पढ़े हो ना आप लोग? Which are the elements of management? बताओ तो मुझे. Planning, organizing, staffing, directing, and controlling. What does it mean controlling? Controlling means controlling of the distractions. यही है ना? उसके लिए आप डिफरेंट मेथोडोलॉजीज यूज करते हो, चाहे वो ट्रेडिशनल हो चाहे मॉडर्न हो. तो डिस्ट्रैक्शंस को क्यों कंट्रोल करते हैं? व्हाट इज द नीड ऑफ कंट्रोलिंग डिस्ट्रैक्शन? to get the optimum utilization of resources. At the same time, you have to maintain the productivity level also. है? So that's why for controlling the distractions, there is controlling mechanism, जिसमें आप बहुत से methods पढ़ते हो. ट्रेडिशनल में आप पढ़े होगे, मॉडर्न में ROI पढ़ते हो, रेशियो एनालिसिस पढ़ते हो ना, मैनेजमेंट ऑडिट्स पढ़ते हो, रिस्पांसिबिलिटी सेंटर्स पढ़ते हो, सिक्स सिग्मा पढ़ते हो, CQM गो थ्रू करते हो. These are there for controlling the organizational health. If you feel sick, you go to meet the doctor. They go for the proper diagnosis. उसके बाद ही ना दवा लिखते हैं, ठीक है? In the same manner, if you find the organization there is some discrepancy while executing the different levels of assignments in organization, then there are certain medicines, and those medicines are called controlling techniques. Even in the same form, you have to control the manpower also. Whenever you work for any organization, the most difficult segment to handle with, that is called manpower. सबसे ज्यादा डिफिकल्ट. आप मशीन हैंडल कर लेते हो, पैसा हैंडल हो जाता है, but human resource को हैंडल करना it's too tough. You will find one clear-cut line in any book. If you are working on the different concepts of the management related to human resource, then it is a futile effort because human minds are unpredictable. ठीक है? So that's why this performance appraisal system is there, just to monitor you. Now you just go through these lines. While attending the performance appraisal system, you will set certain standards, and just by setting those standards, you will monitor whether those standards are meeting with the deadlines or not. If there is any lacuna, there is any flaw in that respect, you will take corrective measures. And while taking corrective measures, you would come across that these are the certain areas where you need to work on. ठीक है? तो आप जो human resources पे work कैसे करोगे आप? इसके लिए क्या है? There should be some methods. Next slide. This is also called merit rating, annual appraisal. Okay, this is the performance appraisal. There is another term that is called potential appraisal. If you are appraising the person on yearly basis, appraisal में हम लोग क्या करते हैं? Companies में we review the appraisal process once in a year. एक साल में एक बार appraisal होता है. If you talk about software industry, 6 years पे appraisal होते हैं. ठीक है? 6 years पे होते हैं. और there is another term which is called potential appraisal. ये तो आपका रूटीन हो गया परफॉर्मेंस appraisal. ये हम लोग इसलिए करते हैं परफॉर्मेंस appraisal. ये आप में जो भी, अगर आप पॉजिटिव हो, if you are a good employee, even after that, then you may say कि सर इसके बाद भी अप्राइजल की जरूरत है. There is possibility. मैं आपको एक मॉडल दिखाऊंगा, फिलिप मॉडल, that is called फिलिप मॉडल ऑफ पोटेंशियल अप्राइजल. उसमें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. और here comes one another term that is called potential appraisal. What is potential appraisal?
द हिडन क्वालिटीज जो आप में है. सपोज इफ यू आर वेरी गुड इन कोडिंग, suppose if you are very good in managing the resources, even after that definitely there will be some other aspects also which also may be upgraded. वो अपग्रेड कैसे करेंगे? थ्रू दिस पोटेंशियल अप्राइजल. और वो पोटेंशियल अप्राइजल मींस क्या होता है, क्यों करते हैं हम लोग पोटेंशियल अप्राइजल? डू यू हैव एनी आइडिया? कुछ समझ आ रहा है? पोटेंशियल अप्राइजल इसलिए करते हैं बिकॉज देयर आर सर्टेन टर्म्स व्हिच आर रिलेटेड विद एचआर, दैट इज कॉल्ड करियर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट. Have you ever heard this term career planning and management? Yes या no? What is career planning? अभी career planning की वजह से ही आप यहाँ हो, समझ रहे हो? If you are having a, that is called career anchors. Anchors का मतलब समझ रहे हो? जहाज में लंगर गिराते हैं ना, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, उसको रोकने के लिए, that is called career anchors. So even in organization also, if you are taking HR as a specialization in your BBA curriculum, then you have to work on different segments. There are 3 certain segments in HR field, that is called RMG, Resource Management Group. Second is called payroll. Third one is called compliances. So in these particular area, you have to develop your career. तो आपको career anchors जानना है कि नहीं? आप एक साथ सभी चीज में मास्टरी नहीं कर सकते हो. You have to act accordingly. तो आपका जो पोटेंशियल अप्राइजल है, when you are working in any organization, then what you will think about that, you have to make your career with payroll management. सपोज आपने डिसाइड किया, तो आप अपने करियर को उसी प्रोस्पेक्ट में आगे बढ़ाते जाओगे. और पोटेंशियल अप्राइजल का मतलब है कि इफ आई एम बीइंग योर मैनेजर, इफ आई एम विजुअलाइजिंग नहीं दिस हर्ष इज हैविंग सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी strength and that must be nurtured. In that direction, I will try to make hers or give some certain kind of training modules to and provide hers so that he can effectively work in that direction. So what is that is called? That is called succession planning. तो जब आप potential appraisal में जाते हो तो with certain specification, and which are those specification? That is called career planning and management and succession planning also. मतलब if I am thinking hers is having some strength and in future he can take my position as manager HR, and in that prospect I will try to provide certain training modules to her, and that is called succession planning. इसके लिए भी जो है पोटेंशियल अप्राइजल को हम लोग जज करते हैं. अब एक फिलिप का मॉडल देखो, इसको आप लास्ट में लिख के जाओ, तो आगे बढ़ते जाओ, फिर बैक आएंगे, ठीक है? इससे घबराना मत, इतने स्लाइड को दिखाने के लिए है, ठीक है? बैक और नीचे जाओ, और एक और दिस इज द बैक जाओ. This one 23rd. Okay, this is the model that has been given by Philip. And this is called Philip's potential appraisal model. Okay, here you can find out 2 parameters. On x-axis you can find performance, and on y-axis it is called potential. ठीक है? अब तुम लोग तेज हो, खुद से देख के बताओ. Here performance is low, potential is also low. तो ये बच्चे कैसे? सेपरेशन, प्लांट सेपरेशन. मतलब क्या? Did you get this concept of plant separation? We used to do in companies. प्लांट से अगर परफॉर्मेंस भी खराब है और तुम्हारी जो पोटेंशियल है, फ्यूचर असाइनमेंट्स लेने की क्षमता भी कम है, देन सेपरेशन इज द सॉल्यूशन. मतलब क्या हुआ? प्लांट सेपरेशन मींस इनको कंपनी से हटाओ. क्लियर? और अब यहाँ पे देखो, पोटेंशियल हाई है बट परफॉर्मेंस लो है, तो क्या कहा जाता है इनको? प्रॉब्लम्स. In companies, you will find such kind of employees who are having potential. Even after that, they are not intended to work properly. तो बदमाश बच्चे कहलाते हैं. For those also, इनको भी सुधारना जरूरी है. Okay? Now see the third line. Performance high, potential भी high. Star performance. Elite group of the companies. जो आप कंपनीज में ऐसे लोग ही कंपनीज को चलाते हैं
एंड इफ यू सी द रेशियो ऑफ दोज पीपल, वो बहुत कम होता है. आई विल शो यू द बेल कर्व मॉडल, जस्ट अभी दिखाऊंगा आपको, फिर मैं आपको बताऊंगा परफॉर्मेंस का बेसिक. समझ में आया? और फोर्थ लेवल देखो, हाई परफॉर्मेंस हाई है, पोटेंशियल लो है. सिटीजन, सॉलिड सिटीजन मतलब क्या हुआ इसका? दे आर एडिक्टेड टू 9 to 5 जॉब. भैया असाइनमेंट दो मेरे को, शाम तक मैं कर दूंगी. बट आई एम नॉट ड्रीमिंग इन फ्यूचर आई एम गोइंग टू बिकम मैनेजर और जीएम ऑफ दिस कंपनी. सैलरी जितना मिल रहा है उतना काम हम ईमानदारी से कर रहे हैं. बट एज फार एज पोटेंशियल इज कंसर्न, दैट रेशियो इज बिट लो इन दिस पीपल. बट ये ज्यादा मेजर चंक ऑफ द पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन विल फाइंड इसी एरिया में. क्लियर है ये फ्लिप मॉडल? ठीक है. अब देखो इसी के ये कॉन्सेप्ट हम लोग फिर से देखेंगे. जैसे ये देखो 24 को दिखाओ तो आप. It is one of the traditional methods of performance appraisal. जब इस पे हम लोग बात करेंगे, ये मॉडल कभी देखा आपने? समझ में आ रहा है? This is called bell curve model, or it is one of the traditional methods of performance appraisal. It is also called force distribution method. देख रहे हो? ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी हालत रहती है. If you are so honest, and in future if you are going to join somewhere in organization, you will find the same situation. 10% low performer. Clear? 70% वही आपको सिटीजन वाला जो ग्रुप है, सॉलिड सिटीजन, और 20% हाई परफॉर्मर. एक्चुअल काम कौन निकाल रहा है? 20% with the support of those 70%. और वो 70% कौन हो गए? Those who are followers. And in 20% those who are risk takers. जो लाइट ग्रुप हुआ, ये लोग रिस्क लेते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, हाई परफॉर्मर हैं, और इनके सपोर्ट में ये रहे. कंपनी इन पे फोकस करती है. आप अप्राइजल सिस्टम को आप एनालाइज करो. हियर कंपनी इज अप्रेजिंग दोज पीपल कि भैया पकड़ो उन लोगों को जो लो परफॉर्मर है. वेदर यू डिटैच दोज पीपल फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन और you try to give certain kind of PIP, that is called performance improvement plans. You can note down also. ठीक है? PIP यहाँ पे हम लोग देते हैं इनके लिए 10% के लिए. भैया परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान दो इनको. If they are upgrading themselves as far as job assignment is concerned, then it's okay. Otherwise, go for plan separation. निकालो उनको कंपनी से बाहर. If you are coming in the segment of those 70%, क्या होगा? Will be given again training models to come in this area. आप 70 से बाहर निकलो और 20 में आ जाओ and become high performer. Clear? और हाँ सर, yes, that is correct. और ये 20 वालों का कहोगे सर ये तो सबसे ऊपर है, इनको तो जरूरत ही नहीं है. Why we are giving focus on this segment also? कोई आंसर दे सकता है? One answer. Anyone else? मोटिवेट हुए. और कोई? चलो गुड. कंटिन्यूटी, रिटेंशन. ठीक है, रिटेंशन भी करना है ऑफ गुड एम्प्लॉइज एट द सेम टाइम. हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेशन प्लानिंग. भैया ये 20% में ही आप एमडी बनाओ, ईडी बनाओ, जीएम का पोस्ट, तो इनको बड़े पोस्ट पे लेके जाओ, सो दैट कंट्रोलिंग मैकेनिज्म काम करता है. ये बेल कर्व मेथड है. समझ में आया? चलो अब हम लोग फिर से स्टार्ट में चलते हैं. ठीक है, पोटेंशियल अप्राइजल समझ गया, परफॉर्मेंस अप्राइजल. डिड यू गेट दिस कॉन्सेप्ट? इफ यू आर नॉट गेटिंग द कॉन्सेप्ट, ट्राई टू इंटरेक्ट विथ मी. ठीक है, सेशन थोड़ा सा पास होगा. I will try to cover up the entire performance appraisal system. ठीक है, to try to make the concentration in a proper way. ये सब थ्योरी है. ठीक है, you'll go through these different segment of performance appraisal process. सब जगह आपको मिलेगा. You will find this process easily. You can find it on Google. Establish performance standard, communicate the established performance standards का मतलब है, there is very good term I will use, that is called KRA. परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को आप सेट कैसे करते हो? पहला तो प्रॉब्लम यही है, हाउ डू यू सेट द टारगेट्स? बताओ, किसी भी एम्प्लॉय को टारगेट सेट कैसे करोगे? इसको इतना ही काम करना है. पोटेंशियल बात की बात करो, दैट इज हिडन प्रोस्पेक्ट ऑन देयर परफॉर्मेंस. बट परफॉर्मेंस मेजर कैसे करोगे? हाउ डू यू मेजर द परफॉर्मेंस?
by their activities. Which are those activities? Yes, now you are coming to the point. पढ़ा है job analysis, job description, job evaluation, job enrichment, job enlargement, job responsibilities, JD manual. Sir, you will get JD manual in each and every organization. What is that JD manual? This is well defined. Whenever you are starting any company, first you will go for job analysis. भैया job analysis करो. कभी ऐसा सुना है one lecturer is getting more salary than to a professor? सुना है ऐसा? नहीं सुना. प्रोफेसर को ज्यादा मिलने वाला. क्यों मिलेगा भैया? Because he is having some extra additional qualities as far as experience, eligibility criteria also. समझ रहे हो? तो ये जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं, this is the most important segment of performance. If you talk about KRA, that is called key result areas, KPIs, key performance indicators. ये सब चीजें क्या हैं? It helps in setting up the standards. एक मैनेजर को क्या क्या काम करना है, अगर वेल डिफाइंड रहेगा तभी तो तुम स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल करोगे. हाँ, स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल लोग कैसे करते हैं? If standards are set predefined, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर एम्प्लॉय को पकड़ेगा कि भैया हर्ष आपने ये काम नहीं किया है. As per your job description, these are the certain assignments. Whenever you are going to join the organization, you will have to sign the job responsibility. ठीक है? I was involved in HR, core HR area for 6-7 years. I have seen the actual HR performance. तो आपको वहां पे साइन करना पड़ता है. These are the certain responsible roles and responsibilities. It has to be defined earlier. Then only you will be able to judge the people, judge the employee as per their performance. ये समझ में आ रहा है? If you are establishing the performance standard, employees को भी बताओ कि भैया these are the targets, and if you are not achieving it, तो find the root cause analysis पे आप जाओ कि आप क्यों नहीं कर रहे हो. ठीक है? समझने में कोई दिक्कत? नेक्स्ट पे जाओ. चलो एक ब्लैंक है, नेक्स्ट पे जाओ. क्या हो रहा है सर? हर्ष को पसंद नहीं आ रहा है क्या? ओके, इससे पहले अच्छा चलो ठीक है. टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस असेसमेंट. जस्ट आई टोल्ड यू दैट देयर शुड बी सम टूल्स थ्रू व्हिच यू कैन मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज. अब ये टूल्स क्या है? दिस इज कॉल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स. ट्रेडिशनल मेथड्स का मतलब होता है जो पहले से चल रहा होगा. ठीक है? इसमें एक मेथड, काफी सारे मेथड्स हैं. इसमें एक है एकदम इसको ट्राई. अच्छा चलो एक काम करते हैं. If I talk about your memory line, can you remember these different traditional methods and modern methods instantly? याद कर सकते हो 5 मिनट के अंदर में? You can take help of the technique that is called tagging. इसमें जस्ट एक कहानी बनाओ. ट्राई करो. कोई ऐसा है जो इसको मुझे समझा सकता है? समझा नहीं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट. जस्ट इसको याद करो. Right. Regularly I do this in BTech also and MBA also. इसको ट्राई करो. I just want to check your memory level. Thank you. Slide सुन लो ना. Try it. This is a memory game. I will give you only 5 minutes time. Use the technique tagging. कहानी बनाओ, उससे सब याद आ जाएगा. You will memorize all the things. ठीक है?
I may be a bit fast, but I have to cover up the topic. That's why, because all these different modern methods would take entire one session. अगर अलग अलग पढ़े हैं तो एक एक सेशन का ये सब है. Try it. Anyone? कौन में शार्प मेमोरी कितनी है आप में? It is not at all related to your academic percentage. ठीक है, कोई भी स्टूडेंट का शार्प मेमोरी हो सकता है, even if he is not getting good marks. So try it. Last 1 minute. Any one of you. Raise your hand. If anyone, at least try करो. एक दो को ही पूछूंगा, फिर मैं आगे बताऊंगा. It's my personal experience. I'm not saying this for demoralizing you, but the thing is that I have gone through the BTech students also and applied the same responses. Was tremendous. BTech से बहुत अच्छा fast response आता है. So you have to develop your mind as far as technology is concerned. उसी prospect में आप लोग भी रहो, एकदम proactive होके इसको करो. चलो time up. कोई भी single कोई raise your hand. At least try it. At least try it. देखो, why I'm doing this? Because whenever you would enter into the cabin of your bosses now, in future you are, because your institution is having very good placement. So whenever you are going to touch your boss's cabin, you'll find n number of instructions in a single attempt. You have to memorize all them and you have to just note it down also. That's why you need to have sharp memory. ठीक है? चलो anyone, चलो ठीक है, किसी ने नहीं किया है. इस सारे ट्रेडिशनल मेथड. ओके, लास्ट बेंच. व्हाट्स योर गुड नेम? अभिनव. यस अभिनव, गो थ्रू. हाँ, जितना हो पाए. अच्छा चलो, इतनी स्मार्टनेस तो है. ओके. नो, ही इज लुकिंग इनटू माय आईज. ओके ओके. मॉडर्न मेथड बताओ. ओके ओके ओके. Bars, yes, you can say. Let's have a clap. It's a round of applause for our. Yes, it was a good attempt. ठीक है, it was a good attempt. चलो अच्छा है. अब देखो, if I try to explain all the concept, it would take more time. समझ रहे हो ना? काफी सारे methods है, but तुम लोग भी लिमिटेड टाइम फ्रेम में पढ़ते हो, तो दैट्स व्हाई एकदम अच्छे से इसको सुनो, तुम्हारा बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट्स आर वन लाइनर्स. उसके को पढ़ने के लिए बहुत बुक्स की पढ़ने की जरूरत नहीं है. इफ यू आर हैविंग द कॉन्सेप्ट, क्लियर कट कॉन्सेप्ट, आप उस पे पन्ने लिख सकते हो यूनिवर्सिटी एग्जाम में. कॉन्सेप्ट क्लियर रखो. रैंकिंग मेथड, इससे पहले भी एक मेथड है, दैट इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड अप्राइजल मेथड. अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या हुआ? मुझे ठीक लगा, मेरी कंपनी है,
मैं अपने परसेप्शन से, व्हाट आई परसीव फॉर यू, मैं रैंकिंग दे दिया। अच्छा ये चलो हर्ष को आज हर्ष की बारी है। हर्ष अच्छा लड़का है, इसको चलो अच्छा रैंकिंग दे देते हैं। इफ हर्ष इज नॉट टेकिंग माई कॉल्स प्रॉपरली, ऑबिडियंस नहीं दिखा रहा है, उसको पीछे रख देंगे मेरी मर्जी से। तो पहले कंपनीज तो ऐसे ही चलती थी ना, पहले अब आप मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस करो, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, तो लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड, यही कॉन्सेप्ट था पहले। देन रैंकिंग मेथड है, 3-4 एट्रीब्यूट्स पे, इफ यू टॉक अबाउट इंटरपर्सनल स्किल्स, if you talk about punctuality, if you talk about attendance, based on these attributes, अगर if you are having a small organization, rank करो, rank करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप में आप rank करो। इसको भी हटा दो, मुझे पता है बोर्ड का मैं यूज करना चाहता हूँ, ठीक है। एकदम सिंपल है, मेथड्स आर सो सिंपल। अच्छा ये विजिबल होगा विदाउट लाइट, दिस वन, ठीक है, ओके। चलो देखो, जस्ट कॉन्सेंट्रेशन 10 से 15 मिनट का रखो, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। रैंकिंग, I am having only 10 employees. Do you understand the concept of flat structure and tall structure? आप सेकेंड ईयर में हो ना, यू शुड नोन टू क्या होता है फ्लैट स्ट्रक्चर। कोई भी ट्राई करो यार, गलत ही होगा, क्या होता है इससे, दिक्कत क्या है, यू जस्ट अटेम्प्ट ऑन इट। हॉरिजॉन्टल एंड व्हाट इज टॉल स्ट्रक्चर, कैसे बनता है ये। इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट एनी कंपनी, सपोज इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ एनी ओपीसी, ओपीसी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओपीसी, 1% कंपनी, जिसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मान्यता प्राप्त है, मेन पावर कम है, फ्लैट स्ट्रक्चर। तो 5 लोगों को तो रैंकिंग में मैं नहीं लाऊंगा ना। इफ यू टॉक अबाउट टॉल स्ट्रक्चर, व्हेन डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस गोज ऑन, जब कंपनी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, लाइंस बढ़ने लगते हैं, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द मेन पावर। तो कई लेवल्स बनने लगते हैं, टॉल स्ट्रक्चर वर्टिकली गोज अपवर्ड, in that prospect it is difficult to go for the ranking. Clear? This is called ranking system. It is comfortable for a small organization. पहले के अभी भी स्टार्टअप्स में ये यूज होता है। हमने रैंक कर दिया, कुछ बेसिक एट्रीब्यूट्स लेके उनको रैंक कर दिया एज ए होल सम, ठीक है, कंप्लीट रैंकिंग। मैं प्रोज एंड कॉन्स में अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि काफी टाइम लग जाएगा उसमें। पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, आई एम हैविंग अ वेरी बैड हैंडराइटिंग, डोंट वरी, पढ़ लोगे आप लोग, ठीक है। देयर इज अ सिंपल फार्मूला बिहाइंड दिस। व्हाट इज द फार्मूला, ये पता होगा, पता है ना, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल, चलो 5 लोग का, आप में टॉपर कौन है, टॉपर सत्या, क्या पढ़ते हैं, कैन यू 5 टीचर्स है, ए बी सी डी, पेयर कंपैरिजन मेथड में लिख के दिखाओ तो डिफरेंट ब्लॉक्स, हर सिंगल पर्सन टू सिंगल पर्सन ये कंपैरिजन होता है। दिस इज आल्सो सुटेबल फॉर अ स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन ओनली। कैन यू अटेम्प्ट ऑन इट, इट्स वेरी सिंपल। 5 लोग का लिया, 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, कितने ब्लॉक्स बनेंगे, 10। क्लियर, लिखो इनका नाम, इट्स वेरी इजी, ए बी, ए सी, ए डी, ए, clear, then go for BC, BD, B, clear, CD, then C, and last is D. Count करो, go for the counting, 10 हो गया। Paired comparison method for a smaller organization, when you fix up different parameters, punctuality कैसा है, commitment of assignments कैसा है, डिफरेंट पैरामीटर्स आप फिक्स कर देते हो, बेस्ड ऑन दैट आप कंपेयर करो, सबका कंपैरिजन सबसे हो गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पेयर्ड कंपैरिजन। गॉट इट। थर्ड वन इज ग्रेडिंग। ग्रेडिंग पे मैं तुमको ऑर्गेनाइजेशन में
अप्राइजल सिस्टम कैसे काम करता है वो मैं दिखाता हूँ। थोड़ा सा फास्ट लर्निंग रखो, थोड़ा सा मैं जल्दी इसको निकाल रहा हूँ, बट इट विल टेक मेनी सेशंस टू कवर अप दिस एंटायर सिंगल टॉपिक। अब देखो ग्रेडिंग कैसे होता है, कभी देखा है ये ग्रेडिंग? आउटस्टैंडिंग रख सकते हो, सुपर भी रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुम वेरी गुड, क्लियर, ठीक है, गुड रखो, एवरेज रखो, एंड बिलो परफॉर्मेंस, बिलो परफॉर्मेंस ना, बिलो लेवल परफॉर्मेंस। तुम कहोगे सर इससे अप्राइजल, हाउ डू वी जज द अप्राइजल, इंटायर अप्राइजल सिस्टम बेस्ड ऑन दिस 5 कैटेगरीज? ये तो सर थ्योरी है, दीज आर ओनली टेक्स्ट, आई विल जस्ट शो यू। देखो जैसे देखो, जस्ट गिव डिफरेंट बकेट्स टू देम। सॉफ्टवेयर में जब अप्राइजल सिस्टम का डिफरेंट बकेट्स होते हैं, तो बकेट्स क्या है? ए डबल प्लस, मैं दिखाता हूँ एक्चुअल व्हेन आई वाज इन जॉब, जब मैं एचआर हैंडल कर रहा था 3-4 years entirely I have handled this performance appraisal system, तो बहुत बहुत कन्वर्सेंट हो गया उस सिस्टम से। ए प्लस ए, बी प्लस बी हो गया। अब बोलोगे सर ये एबीसीडी लेके क्या करेंगे? तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस एबीसीडी है क्वेश्चन। नाउ जस्ट अटैच certain specifications with the different buckets. If you are having a double plus, get promotion and 20% salary है। आप कुछ दिख रहा है? ठीक है, ए प्लस में आओ, 15 to 20% सैलरी है, समझ में आ रहा है? ए है 10 to 15%, बी प्लस है 5 to 10% कर दो, और ये पीआईपी में लेके जाओ। व्हाट इज पीआईपी नाउ? आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट पीआईपी, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान। उनको भेजो भाई, उनको वार्निंग दो, इन प्लेस ऑफ प्रोवाइडिंग देम इंक्रीमेंट लेटर्स, उनको निकालने का प्लान सेपरेशन में जाओ। कॉन्सेप्ट याद है? फ्लिप मॉडल, प्लान सेपरेशन, ठीक है। और जो इस ग्रुप में आ रहे हैं उसको किस कैटेगरी में रखोगे फ्लिप मॉडल में? पोटेंशियल अप्राइजल के। और भी एक था एम्प्लॉय प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम चिल्ड्रन उनको बोला जाता है। भैया ये बच्चे काम आता है बट करते नहीं है, जैसे आप लोगों को भी बोला जाता होगा ना, पढ़ना चाहते हैं बट कितना भी मुझको पढ़ते नहीं, प्रॉब्लम चल रही, ठीक है। समझ में आया ये? दैट इज कॉल्ड ग्रेडिंग, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। Can anyone take name of that method which I just told you in starting the session? Bell curve method, ठीक है, याद रहेगा? Bell curve method is also known as force distribution method. और वो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कैसे होता है? फोर्स का मतलब ये है जबरदस्ती, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है परसेंटेज पे आप लोग। हमने क्या किया था फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में? 20% हाई परफॉर्मेंस किया, 70% एवरेज और 10% बिलो, क्लियर। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बेल कर्व मेथड बोलते हैं, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि व्हेनेवर वी आर हैविंग दिस परफॉर्मेंस अप्राइजल और मेरिट टेस्टिंग सिस्टम इन आवर कंपनी एंड वी ट्राई टू अप्लाई इट, तो जितना भी प्रॉफिट होता है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, टू गेन द प्रॉफिट, ठीक है, यही रहता है ना। और आजकल तो और भी बातें चेंज होने लगी है। हैव यू एवर गॉन थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी सेंटर्स? कंट्रोलिंग जिन्होंने पढ़ा होगा उनको याद होगा। यू हैव एनी आइडिया ऑफ रिस्पांसिबिलिटी सेंटर क्लास? कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, तो बताओ, यू हैव गॉन थ्रू ऑल द कॉन्सेप्ट, तो बताया करो, ठीक है। आजकल कंपनी इस पैटर्न पे चलती है। प्रॉफिट सेंटर मतलब इफ यू आर हैविंग, ये तो समझते होगे, पिरामिड, एचओ, आरओ, साइट्स, हेड ऑफिस, रीजनल ऑफिस, साइट्स। तो आजकल रीजनल ऑफिसेस को क्या है? प्रॉफिट सेंटर में कन्वर्ट किया जा रहा है। इफ यू आर हैविंग वन रीजनल सेंटर इन हैदराबाद, वहां का प्रॉफिट लॉस, वहां का टेंशन। इफ यू आर वर्किंग इन रीजनल ऑफिस एट पुणे, दे आर नॉट, अगर उनको प्रॉफिट हुआ है तो शेयर नहीं करेंगे हैदराबाद से, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पे वो चलता है।
तो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में अप्राइजल सिस्टम में क्या होता है कि कोटा फिक्स होता है। हाँ, कोटा फिक्स होता है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में, और वो कैसे फिक्स होता है? इफ यू आर हैविंग ए लिमिटेड नंबर ऑफ और अमाउंट दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज फार एज परफॉर्मेंस अप्राइजल सिस्टम इज कंसर्न, वो एलोकेट हो जाता है कि भैया 3 करोड़ ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, और हर रीजनल ऑफिसर जो है 10 प्रमोशन ही देंगे। फोर्स वैसा है, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड समझ रहे हो? आप एम्प्लॉइज को अगर अच्छा भी है, इसका जो है नेगेटिव थॉट है, अगर अच्छा भी है एंड इफ यू आर हैविंग ए रिस्ट्रिक्शन कि भैया 10 को ही प्रमोशन देना है, ऑटोमेटिकली इससे हटा के तो इसमें डाल दोगे उसको। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बहुत सी कंपनीज इसको अप्लाई करती हैं, और मैं जब कंपनीज का आपको नाम दिखाऊंगा तो आप कहोगे कि अच्छा ऐसी ऐसी कंपनी इसको। बेल कर्व मेथड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड एज फार एज ट्रेडिशनल मेथड इज कंसर्न। समझ में आया इतना? चेकलिस्ट मेथड, चेकलिस्ट भरते हो कभी शॉपिंग मॉल में? इफ यू गो टू शॉपिंग मॉल देयर विल बी सम पर्सन हु प्रोवाइड यू वन चेकलिस्ट, सर ये पसंद आया, यस नो यस नो यस नो, ठीक है? दिस सेम गोज एज फार एज एम्प्लॉय इज कंसर्न, ठीक है? अभी ये है प्रणय, प्रत्यय, अच्छे हैं, पंक्चुअल हैं, यस, अप्राइजल इज बीइंग डन, क्लियर? समझ, एकदम कम कम मैं बता रहा हूं आपको। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, आई हैव सीन दिस मेथड इन बोकारो स्टील प्लांट। दिस इज द नवरत्न यूनिट ऑफ वन पीएसयू। सेल का नाम सुना है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसका यूनिट है बोकारो स्टील प्लांट में, वेयर दे यूज्ड टू अप्लाई दिस क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। कोई भी बता सकता है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड? बता। सिचुएशन बेस्ड अप्रोच। अच्छे मैनेजर की पहचान भैया रिपीटेटिव वर्क में नहीं होती है, अच्छे मैनेजर की पहचान डिफिकल्ट सिचुएशंस में होती है, ठीक है? सर आई हैव टाइम और 5 to 10 मिनट्स मोर, ओके ठीक है, ओके। तो क्रिटिकल इंसिडेंट का मतलब है ऑन 20th February Mr. Hers has misbehaved with one employee. It will come into his personal file. It would be recorded in the form of documentation. ठीक है? On 20th July, because of a good suggestion of Mr. Hers, company gained 20% profit in certain segments. It would automatically come to his personal file. At the time of appraisal, वो सारे क्रिटिकल इंसिडेंट से ही उनको रेटिंग दी जाएगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्रिटिकल इंसिडेंट। नॉर्मल वर्क तो कोई भी करता है, बट एज फार एज डिफरेंट डिफिकल्ट सिचुएशंस आर कंसर्न, इन दैट हाउ यू आर रिएक्टिंग दैट मैटर्स अ लॉट। अच्छे मैनेजर और टफ मैनेजर की यही पहचान होती है, ठीक है? दैट्स व्हाई स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप में पढ़ते हो ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक इज नॉट ए रॉन्ग मेथड। व्हेन यू आर हैविंग टाइम बाउंड प्रोजेक्ट, आप ऑटोमेटिकली ऑटोक्रेटिक हो जाओगे। हाँ ठीक है, ओके, आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। चलो इसको रखते हैं इतना ही, ठीक है? डिफरेंट मॉडर्न मेथड्स जिसमें 360 डिग्री अप्राइजल है, पढ़ा है आपने? 360 डिग्री अप्राइजल के देयर आर सो मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आल्सो। 90 डिग्री अप्राइजल मेथड इज देयर, 180 is there, 270 is there, 360 is there, then 720 is also there. But what is the reason of failure of 360 degree appraisal? आप ही पढ़े हो ना 360, what is the difference between 90 degree appraisal, 180 degree appraisal and 360 degree appraisal? 360 degree appraisal is that appraisal जहां पे आप लोग मेरा रेटिंग करोगे और तब तुम लोग कहोगे आप बदला लेते हैं। कलीग्स तो चल तो ठीक है, but when subordinates are giving rating to seniors, then it becomes tough. क्योंकि because of having execution of assignments, seniors क्या करते हैं, कोर्सिव वे में जो है काउंसअप करते हैं अपने स्टूडेंट, अपने जूनियर्स पे। At the time of rating, because it is confidential,
तो हो सकता है आप गलत रेटिंग दे दो। 360 degree appraisal, because there are so many multi-raters are there, that's why it becomes very tough to evaluate the person. 50% of the raters are saying कि भैया हर्ष अच्छा है, और 50% are raters are saying कि ये गलत है। HR got confused, ठीक है, कि अब इसको रेटिंग कैसे देना है, so that's why it becomes very tedious to judge in 360 degree appraisal. But even after that, companies are following to just have a fairness in appraisal system, ठीक है। If you talk about MBO, given by Peter Drucker, and I think there is a very good concept in MBO. You first develop the objective of the organization and translate those objectives with the employees. कंपनी के ऑब्जेक्टिव को एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव में आप कन्वर्ट कर दो। देखो एमबीओ का एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दिस इज कंपनी मिशन विजन गोल ऑब्जेक्टिव, जो भी आप बोलना है, इसको ब्रेक करते जाओ और उस लेयर तक लाओ जो लास्ट एम्प्लॉय को भी एक ऑब्जेक्टिव मिल जाए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एमबीओ, ठीक है। इसमें आपको मिस्टर जॉर्ज ने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था, स्मार्ट। कोई फुल फॉर्म बताएगा? योर ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, वेरी गुड। ए से एक्सेप्टेबल। भैया आप टारगेट तो मुझे दे रहे हो मार्केटिंग के जॉब में, बट मुझे भी तो एक्सेप्ट करने दो, कितना टाइम मैं जॉब में रहूंगा मार्केट में। देयर शुड बी अ प्रॉपर कंसेंसस ऑन द टारगेट गिवन बाय द कंपनी। समझ रहे हो? 100 यूनिट आप पर मंथ बेचो, चलो जस्टिफिएबल है, कर सकते हैं। आपको दे दिएगा 10,000 का, कर पाओगे? तो टारगेट शुड बी एक्सेप्टेबल ऑल्सो। आपसे 30 से टाइम बाउंड, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एमबीओ। इफ यू टॉक अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग, दो लाइन सुन लो। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। सिंपल है। कॉस्ट इनकर्ड इन हायरिंग एनी एम्प्लॉय। कंपनी सीटीसी देती है आपको, जो भी एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी। आपको रखने में कंपनी को खर्चा कितना हो रहा है, एट द सेम टाइम आप कंपनी को कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। समझ रहे हो? उसमें अगर कंट्रीब्यूशंस का रेशियो ज्यादा है, आप अच्छे पैकेज पे काम कर रहे हो, गुड एम्प्लॉय, बट आप सीटीसी आपका ज्यादा है, कंट्रीब्यूशंस कम है, प्रॉब्लम चिन्ह बन गए ना। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, इवन एचआरए आल्सो, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड। क्लियर? चलो, बार्स है, बार्स थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसको एक एंटायर सेशन लगता है, इसको टच नहीं करूंगा। जस्ट और 5 मिनट दो। बैरियर्स इन परफॉर्मेंस अप्राइजल। बैरियर समझते हो? क्यों बायसनेस होती? इवन आफ्टर हैविंग पेपरलेस वर्क, एज फार एज परफॉर्मेंस अप्राइजल सिस्टम इज कंसर्न्ड, बैरियर्स आर देयर। और वो क्या बैरियर्स है? हैव यू हर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ हेलो इफेक्ट? क्या होता है? एक लाइन में बताना। वेरी गुड, उसको आप काउंट कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड हेलो इफेक्ट। जस्ट बाय वन पॉजिटिव एट्रीब्यूट, बंदा पंक्चुअल है और बॉस भी पंक्चुअल है, बट वो पंक्चुअलिटी 9:15 को आप हो जाता है, बट काम नहीं करता है। बॉस उसको क्या करता है? बिकॉज ऑफ हैविंग ए मैच विद हिज क्वालिटी विद दैट सबऑर्डिनेट, उसको अच्छा रेटिंग देगा। इट इज कॉल्ड हेलो इफेक्ट। व्हाट इज हॉर्न इफेक्ट? एकदम गुड। व्हाट इज रिसेंसी इफेक्ट? रिसेंट इवेंट्स। 10 मंथ अच्छा रहा, 11वें महीने में बॉस से झगड़ा कर लिया, रिसेंसी इफेक्ट। व्हाट इज लीनियंसी इफेक्ट? लीनियंट सिंपल है ये कॉन्सेप्ट, उदार। लीनियंसी का मतलब ही उदार था। तो भैया सबको परफॉर्मेंस में रेटिंग अच्छा दे दो, सबको अच्छा रेटिंग दो। दैट इज द टेंशन ऑफ एचआर टू हैंडल विद। तुमने सबको प्रमोशन चाहिए, ले लो, अच्छा है चाहिए, लेते दो। एंड व्हाट इज सीवियरिटी? मींस you just have a very hard grip over performance ratings. Severity का मतलब क्या है? किसी को अच्छा मत दो, सब दुश्मन है मेरे। This is called severity. And there is one more, that is called central tendency, average. What is the spillover effect? बताओ। Perception. Her she is having a very decent appearance,
सिंस बिगिनिंग ऑफ हिज बीबीए करिकुलम। ये मेरे माइंड में बैठा हुआ है, अब आगे भी जो है हर खराब में भी आए उसको मैं अच्छा रेटिंग दे दूंगा। स्पिल ओवर इफेक्ट, इफ हर चीज रॉन्ग, एक बच्चा जो अगर मेरे को फर्स्ट इंप्रेशन में लग गया ये खराब है, तो ये आपका परसेप्शन डेवलप हो जाता है, नहीं भैया ये खराब है तो है। वो अकेले बढ़ के पढ़ रहा होगा तो हम क्या सोचेंगे, मोबाइल देख रहा होगा। स्पिल ओवर इफेक्ट, these are called barriers of performance and it happens। एक सिंपल सा छोटा सा केस मैं पूछता हूँ आपको, if you are having two subordinates or at the time of appraisal because of forced distribution method एक कोई प्रमोशन देना है, सब चीज इक्वल है as far as eligibility criteria, उसका परफॉर्मेंस सब इक्वल है, बट एक बंदा जो है बिलोंग करता है फ्रॉम योर CIMAGE ग्रुप और दूसरा बैंगलोर का लड़का। At the time of allowing for performance appraisal system, किसको प्रमोशन दोगे? CIMAGE। Why? This is called biasness। समझ रहे हो ना? And it happens। I was surprised to hear from one project manager जब उसने बोला कि भैया उसका चेहरा काला इसलिए मैं अप्राइजल अच्छा नहीं दूं। यहाँ तक लोग करते हैं, ठीक है? These are called barriers। चलो, I will not take just single एक glance देख लो different companies का, जो चेंजेस आ रहे हैं। Just in 2-3 minutes I'm going to conclude। डिफरेंट कंपनीज का नाम देखो, मैं फिर आपको बताता हूँ। हर थोड़ा सा उसको कंपनीज पे आओ तो, ठीक है कि सब गायब है, ठीक है, ओके। 10 के बाद जाओ, हाँ वहां और एक पहले जाओ, जस्ट नेम द कंपनी, नेम द कंपनी, यू विल हैव गूज बम्प्स। ये ऐसी कंपनीज है जिसमें आप काम करना चाहते हो। एक्सेंचुअर, इफ यू गो थ्रू द डिटेल्स ऑफ दिस कंपनी, इन लोगों ने ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड को छोड़ दिया है। दे आर जस्ट अगेंस्ट ईयरली अप्राइजल सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट में जाओ, नेक्स्ट साइड में जाते जाओ। कैली सर्विसेज, एडो, बढ़ते जाओ, ये सब देखने के लिए करो। These are foreign companies, abroad based companies। GE है आपका, डेलॉइट है। नेक्स्ट जाओ, माइक्रोसॉफ्ट भी होगा। Now these popular companies are against this yearly appraisal system। वो बोलते हैं भैया इसमें कोई काम नहीं होता है, एक एक साल पे अप्रेज करते हैं और उसकी वजह से जो है प्रोडक्टिविटी डाउन रहती है। नेक्स्ट जाओ, कंपनीज और देखो। आपके इंडिया में देखो 10 IT कंपनीज जिसमें आप कल को काम करना चाहोगे। नेक्स्ट पे जाओ, गोल्डमैन के बाद आओ, TCS, देखते जाओ। नेक्स्ट, इन्फोसिस आइकॉन पे काम कर रही है, अप्रेजल सिस्टम उन्होंने चेंज कर दिया है, ठीक है। आई काउंट पे उन्होंने काम किया। विप्रो, देखो इस चीज को, जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो, नाउ मार्केट इज रिफ्यूजिंग दोस कॉन्सेप्ट, और मैं उसका रीजन आपको बताता हूं। विप्रो, आगे आगे जाओ। सिस्को, देन IBM ने जो है चेक पॉइंट बनाया हुआ है। वो बोलता है भैया मैं तो 1 साल वाला पे तो भरोसा नहीं, मैं 4 बार अप्रेजल करूंगा हर 3 महीने पे। चेक पॉइंट्स उन्होंने बनाया हुआ अप्रेजल सिस्टम में। माइक्रोसॉफ्ट, नेक्स्ट जाओ। SCL, most of these companies are applying bell curve method, जो force distribution method। Now they are saying we are going to apply real time feedback system in appraisal system। रियल टाइम का मतलब क्या है? आज अच्छा काम किया, कन्वर्ट करो उसको पॉइंट्स में और उसको एम्प्लॉइज के बकेट में डाल दो। समझ रहे हो? इन केस इफ दैट एम्प्लॉय इज नॉट कंफर्टेबल, देन ही मे डिस्कस विथ यू एंड यू कैन गो फॉर प्रॉपर काउंसलिंग। आज की कंपनीज ने नए अप्राइजल सिस्टम को अपनाना स्टार्ट किया, दैट इज कॉल्ड रियल टाइम फीडबैक सिस्टम, ठीक है। चलो, विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग माय सेशन। चलो, ठीक है, इट वाज हार्ड टू कंक्लूड, बहुत सा ऐसा टॉपिक है मतलब काफी मतलब ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में समझना चाहिए आपको। थैंक यू वंस अगेन क्लास। ओके, मुझे ये चाहिए।